soil के बारे में बोला था, about soil formation, types of soil. We have discussed all those things. After that, we have gone to the distribution of flora and fauna over the surface. On today, we can discuss about the conservation of forest and wildlife. So, forest ऐसा एक area होगा, उधर there will be group of trees or plants with diversities, and it consists of multiple animals also. So those animals who are living in this forest area, usually we will consider that as wildlife. So wildlife means the animals which are usually staying in this forest area or in preserved areas. Those are wildlife. Anyway, when we say about the forest is an area which should be minimum 0.5 hectares of land chahiye. The tree, there should be an area of minimum 0.5 hectares with the trees higher than 5 meters. 5 meters के ऊपर होनी चाहिए उधर का trees. And the canopy cover बोलने से एक मिनट 1 minute. कैनोपी कवर बोलने से अभी ट्री हो गया, ट्री का जो ऊपर वो एरिया, दिस इज द एरिया कैनोपी, इसका एक्सटेंशन. सो अभी एक फॉरेस्ट है तो इसका कितना परसेंटेज ये कैनोपी कवर होगा, ये ऊपर का जो कवर, ये टॉप पोर्शन, तो ये मिनिमम इट शुड बी मोर देन 10%. और अभी फ्यूचर में भी ऐसा एक जगह है उसी एरिया पे, फ्यूचर में भी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द कैनोपी कवर टू बिकम मोर देन 10%. देन दैट एरिया वी कैन से इट एज फॉरेस्ट. मिनिमम 0.5 हेक्टेयर्स चाहिए. सेकंड वन, इसके अंदर जो ट्रीज है उसका तो 5 मीटर्स के ऊपर होनी चाहिए उसका हाइट, मिनिमम हाइट. एंड not for all, but most of the trees should have minimum 5 meters of height honi chahiye, and the canopy cover should be more than 10%. But there is some more demands. That area should not be agricultural area. Agricultural area nahi honi chahiye. Like if we are planting rubber plantation bana rahe. So if we are making a rubber plantation में क्या होगा, 0.5 हेक्टेयर्स के ऊपर होगा वो प्लांटेशन. एंड इसके साथ क्या होगा, ट्रीज का हाइट 5 मीटर्स के ऊपर होगा. एंड द कैनोपी कवर इज ऑलमोस्ट 90%. बट दैट एरिया वी कैन से इट एज ए फॉरेस्ट बिकॉज दैट इज मेनली एन एग्रीकल्चर और ए प्लांटेशन है. सेम लाइक ऑरेंज का भी ऐसा है, 5 मीटर के ऊपर होगा प्लांट का है, और ये तो 0.5 हेक्टेयर्स के ऊपर होगा कई जगह पे. एंड परसेंटेज कवर, कैनोपी कवर भी 10% के ऊपर होगा. बट दैट एरिया तो वी कांट से इट एज ए फॉरेस्ट बिकॉज दैट इज अंडर एग्रीकल्चर. एंड इट शुड नॉट बी अर्बन लैंड यूज एरिया पे अर्बन लैंड यूज और सेटलमेंट उधर नहीं होनी चाहिए. Then only that area can be said it as forest. And what is the peculiarity of forest? Forest are region where most of the animal species and plant species are found together. So इसमें multiple animals होगा, multiple birds होगा, multiple plants होगा, multiple trees होगा, diversified trees होगा इसी area पे. That is a peculiarity of a forest. When we consider the earth, especially the land area, about 31% of the total land area is covered by this forest cover. So that much of area or biome is being dominated by this forest. Again, this forest area has been divided into two. One is primary forest area, second one is secondary forest area.
So primary forest area, when we say, it is a forest area which is being naturally generated होगा. उधर ऐसा होगा, the species will be native और उसी जगह से उसी जगह का adaptable species होगा. And where there is no clear visibility of indications of human activities, उसी एरिया पे कहीं भी human activities support नहीं करेगा. And the ecological processes are not significantly distributed. वो अभी एक जो फॉरेस्ट है उसका अपना सा एक लिमिट होगा, जो अभी बाहर का कुछ इंटरफेरेंस उसके अंदर कभी भी आने के लिए उधर नहीं देगा, कुछ डिस्टरबेंस उसके अंदर आने के नहीं देगा. That kind of forest we can say it as primary forest. अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट है हमारा, वो सब मोस्टली कम्स अंडर दिस प्राइमरी फॉरेस्ट. अरुणाचल का जो अंदर का जो भी फॉरेस्ट कवर उसके अंदर होगा नेटिव प्लांट्स होगा, नेटिव ट्रीज होगा, नेटिव स्पीशीज होगा. एंड इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज टोटली रिस्ट्रिक्टेड है. बट व्हेन कम्स टू द सेकंड वन, द सेकेंडरी फॉरेस्ट, हियर there will be natural growth as well as the artificial growth, like social forestry. Social forestry अभी बोलने से, इंडिया में some statement लेने से we can say it is in that the forest area is increasing. How is that possible? That is not actually natural. That is being created by the humans through natural forestry, through artificial forestry के वजह से हम लोग प्लान करेगा, ट्रीज को प्लान करेगा, इस वजह से there will be forest cover. That kind of forest we can say it as a secondary forest. The main thing is that there should be natural forest होगा, that is okay. नेचुरल फॉरेस्ट कैसे होगा? अभी एक जगह पे कुछ फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन उधर से पूरा फॉरेस्ट को निकाल दिया है, तो बाद में क्या होगा, उधर खुद से दूसरा फॉरेस्ट कवर आ जाएगा इन कोर्स ऑफ टाइम. दैट इज एक्चुअली सेकेंडरी है. प्राइमरी देयर वर a forest but it has been removed, but later on in course of time the secondary forest cover will come. तो क्या होगा, उधर प्लांट्स तो होगा, यंग प्लांट्स होगा, यंग ट्रीज होगा उसी एरिया पे. The second one is this social forestry के वजह से. But if it is being created by artificial method or is by humans, most of the time it will create loss of biodiversity. अभी एक जगह पे if we are planting, we are usually prefer to plant a single type of tree like eucalyptus बना दिया, तो उसी एरिया पे social forestry बना के उधर क्या हो गया, forest बना दिया. But there will be limitation in the species, multiple tree species उसी एरिया पे नहीं होगा. That is the main problem in this secondary forest area. So there is two type of forest area. One is primary forest and second one is secondary forest cover. तो ये forest को why we want to conserve? अभी right now when we heard different news of forest fire in Amazon, in Australia, we have heard lot of forest fire cases. So we are all concerned. Why it should be considered? There are uses also, but there are some human interference इसमें है. इसके वजह से there is a requirement for conservation, because if we destroy forest, if we destroy wildlife, what will be the result? Final result will be the end of the human life. So there is requirement of conservation of this forest. So within over the past 200 years, population कितना तक आ गया है? More than 7 billions.
population है, that much of population in this Earth surface. If we take last 2 centuries ले लिया, उसके पहले जो लिया है, तो उतना सा 0 to last 2 century तक आने के लिए, even if we go to BC, with this 200 years the population has doubled. इतना छोटा टाइम में इतना ज्यादा population हो गया है. So there is a rapid increase in the population. As the population increases, there is demand for resource. There is demand for land. ये दोनों होगा. There is demand for resource, there is demand for land, there is demand for food. क्योंकि population उतना ज्यादा हो रहा है. And the final result is the exploitation of the natural resource, occupancy of more land, occupancy of more land for settlement and for agriculture purpose. For that, what will we do? ये करने के लिए we will use the forest area. पहले हमारे लिए agriculture करने के लिए we need fertile land चाहिए, we need अच्छा drainage का वो जगह चाहिए और more space चाहिए. ये सब कहाँ से मिलेगा? This can be provided by a forest. Forest में उतना ज़्यादा plant है, trees है, because the soil is fertile. That's we know. So we will try to cut it down, and we will occupy that space of the forest. इसके वजह से there is decreasing in the amount of forest cover. If you take the case of Arunachal, we know that the forest cover of Arunachal Pradesh was more than 80%. Now it has been reduced to 79 point something. उतना सा कम हो गया है. When we consider, it is just 1%. But if we take that in hectares, it will be more than 100 to thousands of hectares land forest area कम हो गया. So that will be the environmental impact, ecological imbalance that will create. Other reason, other problem, other importance of conservation is that अभी forest area कम हो गया. There are many species who has taken this forest as their habitat. अपना जगह है देखने का, तो इसका अपना जगह जाएगा. So that will come to be an endangered, extinction or endangered species बन जाएगा, बहुत animals and birds. So these are the some of the requirements, and along with this, इसमें क्या होगा? There will be some hostile species from one part of the world to another. इसका तो movement होगा. Hostile means those who are attacking type का animals एक जगह से दूसरी जगह पर migrate कर देगा, like tiger. तो एक जगह पे इतना tiger था, that is being migrating to some other place for food. So it will affect the food chain. It will affect the ecological balance of that particular region. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा hostile species उधर आ गया, they will start eating the herbivores को खाने शुरू करेगा. नहीं तो other carnivores को ये बड़ा carnivores ये खाने के लिए शुरू करेगा. So there will be reduction in the herbivores. If there is reduction in the herbivores, there will be more plants. So imbalance बन जाएगा. Second important thing is the climate change. Actually, these forests are carbon sink. ये अपना energy बनाने के लिए, it will food बनाने के लिए, it will use the carbon, the plants. So carbon को कम करना था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? Plant कम हो गया, so there will be increase in the amount of carbon dioxide. So carbon dioxide is a greenhouse gas. Greenhouse gas बोलने से ये ऐसा short wave radiation sun से आएगा and it will hit the earth surface and it will return as long waves. तो ये long wave को
हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसा वाला ग्रीन हाउस गैस ने रुका देगा, वाटर वेपर ये सब मिला के तो आगे जाने से रोक देगा. It will prevent the long waves to escape directly back to the atmosphere. इसके वजह से there is terrestrial heating, वो lower atmosphere में heating होगा. It is very much required for the Earth's surface. Minimum temperature नहीं है तो it will go below the freezing point everywhere at the evening time. So for giving certain amount of temperature, this carbon dioxide is very much required. Greenhouse effect is very much required. But what happens is if the amount of CO2 increases, again what happened? The temperature at the lower atmosphere increases. उससे ज़्यादा जो minimum limit चाहिए था उसके ऊपर आ जाएगा. We heard that the global warming is because of the same. तो अभी जो minimum temperature requirement था उसके ऊपर आ गया, तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर पूरा एरिया में ज्यादा हो गया. देयर विल बी आइस मेल्टिंग, देयर विल बी सी लेवल राइज, बर्थ, देयर विल बी क्लाइमेटिक चेंज, एवरीथिंग विल इंक्रीज. सो दैट कटिंग ऑफ ट्रीज विल इनडायरेक्टली अफेक्ट द क्लाइमेट चेंज. देन द पोल्यूशन. अभी एटमॉस्फेयर में इतना अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए, इतना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इतना अमाउंट O3 ओजोन का ये चाहिए, ऐसा बहुत कुछ लिमिट दिया है. बट इफ द फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेस, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन रिलीज कम हो गया, तो देयर इज इम्बैलेंस, सो देयर विल बी पोल्यूशन. कार्बन ज्यादा हो गया तो when it is raining, इसके साथ कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, तो एटमॉस्फेयर पूरा पोल्यूट हो जाएगा. ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कटिंग अप ऑफ ट्रीज. देन हंटिंग, फिशिंग एंड पोचिंग. एनिमल्स को बहुत ज्यादा अभी हंट कर रहे, फिशिंग कर रहे, और उसका स्किन वो सब चीज के लिए उसका तो they are killing it. So there will be decrease in some animals, number of some particular animals. Mostly it is being predator, वो animals है, वो carnivorous है, वो उसी animals को मारता है for their skin. अभी अफ्रीका में सुना होगा lions को they are killing it. So we know that the number of that kind of species is limited. If we again hunt it back, it will be an endangered species. इसको तो protect नहीं. एक बार दुनिया से गया, we can't recreate those animals. We know about dinosaur, but it is been extinct. वो गया है. So whatever our technology will rise, we are not able to create it. So एक बार lion दुनिया से गया है, it is be gone forever. That will happen. Then ऐसा है induced ecosystem. This is actually we are trying to increase the forest cover. We are afforestation. We are creating a afforestation process. We are planting species. इसके वजह से क्या होगा? There will be selective basis में होगा. अभी particular tree को हम लोग grow करेगा. So there will be lack of diversity. तो diversity loss होगा. Because of all these, we need the conservation of forest. Along with this, there are certain uses of this forest. Some of them we have already discussed. First one is to maintain the balance of gases in the atmosphere. To oxygen on the atmosphere. To reduce the amount of carbon dioxide, we need forest cover. कार्बन को कम करना है,
ऑक्सीजन को मैक्सिमाइज करना है फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस, to reduce the pollution level on the earth by reducing the level of carbon dioxide in the atmosphere. There is a carbon cycle. आप लोग सुना होगा, carbon dioxide on the atmosphere is being used by the plant for photosynthesis के time में it will use the carbon, यहाँ का carbon dioxide use करेगा and it will produce food. So it will use the carbon. ये carbon, if the herbivores is taking, जो plant eating animals है, नहीं ये तो omnivorous plants directly, वो सब ये carbon को अपना सा वो खुद से अभी वो अपना सा लेगा, यहाँ से कर देगा वो कार्बन को। इसके बाद इसको तो अभी वो डियर है, अदर चीज को अभी कार्निवोरस ऐसा लोग ऐसा एनिमल्स खाएगा। एंड क्या होगा व्हेन इज, अब ये तो इट विल कम टू द सोइल में क्या होगा, देयर विल बी डीकंपोजेस, वो डीकंपोज कर देगा ये हाँ एनिमल्स को। तो the carbon will come finally to the soil, to back to the atmosphere. यहाँ से it will consume it, यहाँ consume करेगा नहीं ये तो some way it will move back to the atmosphere. So there is a cycle of carbon. For this, which is the factor? ये atmosphere से directly who consume it? The trees and the plants. So this is how it will affect. कार्बन को कम कर रहा है, reducing the level of carbon dioxide. It is getting for a useful purpose. That is a major reason. वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके कुछ बुरा चीज के लिए नहीं है, that is being used, is giving to, is redistributing to others. कार्बन हो गया and it will release oxygen back. ये जो ऑक्सीजन बैक एटमॉस्फेयर में भेज देगा। To maintain that I already discussed. अभी क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, ग्रीन हाउस गैस ज्यादा हो गया, so there will be increase in temperature on the atmosphere. For maintaining this, for reducing the carbon, then it will affect the temperature as well. To maintain the nutrient content and the texture and improve the fertility of the soil. अभी for example ये सब trees क्या होगा, after shedding their leaves, ये leaves कहाँ पे आ जाएगा, it will fall on the earth surface, वो soil में आ जाएगा. And we know that about 20 to 25% of the soil, most of the soil consists, especially in the forest area, it includes the humus content. That is actually the nutrients, nutrient system है. Fertility, it will increase the fertility, this humus content. ये कौन देता है, अपना पत्ते से पेड़ देता है. Otherwise the animals, वो जो करेगा वो मर जाएगा, नहीं है तो through its excretion it will produce humus content मिट्टी को देगा, and that will produce the fertility of the, increase the fertility of the soil. तो ये भी ये contribute कर. Then to maintain the level of groundwater, ये ground water का level को increase करेगा. How it happens? Say for example, this is a slopey surface. अभी यहाँ पानी गिरा है, तो क्या होगा, रन ऑफ के वजह से it will directly fall down, यहाँ नीचे आ जाएगा. But सोचो if there is a tree, यहाँ एक tree है, and it is a deep rooted tree, ऐसा एक tree है, तो क्या होगा, पानी को यहाँ तक ही आ जाएगा, बाकी ये it will come here, यहाँ इसको तो fill करेगा. उसके वजह से क्या होगा, there will be increase in the groundwater level.
for maintaining groundwater level, these trees will support. To maintain the balance of ecosystem and the food chain. Ecosystem अपना habitat है, जो animals है, animals का habitat है forest. तो forest नहीं है तो habitat destroy होगा. Habitat destroy होने का मतलब है ecosystem पूरा disturb हो गया. Food chain कैसे है? Plant होगा the primary producer. Primary producer plant होगा. Plant को कौन खाएगा? Herbivorous खाएगा. Herbivorous को कौन खाएगा? Omnivorous and carnivorous खाएगा. And again it will die. इसको तो decompose कर देगा. So this is the food chain. Decompose करके फिर मिट्टी में जाएगा. That will be consumed by the plant. तो ऐसा एक chain है. तो ये बैलेंस करने के लिए अभी प्लान नहीं है, तो हेर्बिवोरस को खाने के लिए कुछ चीज नहीं है. द एंड ऑफ द फूड चेन, द एंड ऑफ द इकोसिस्टम. सो दैट इज एक्चुअली हाउ द बायोडाइवर्सिटी ये इकोसिस्टम आल्सो मेंटेन. देन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी. If humans, I said, if humans are creating, he can't make diversities. Only the nature can produce the biodiversities. So forest, the naturally creating forest can only produce biodiversities. We can't create it. So this is how the forest is very much useful for the animal or the wild animals are useful. Again, हम इसके बारे में बोला है. तो what are the things that is being provided? One is provides oxygen. Oxygen देता है. Second one plays a significant role in carbon cycle. तो एक कैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट लेगा, प्लांट से वो फूड बना के दूसरे हेर्बिवोरस कार्निवोरस इसको तो देगा, उधर से वो मर जाने से मिट्टी में आएगा, मिट्टी से अगेन इट विल बी टेकन, सो देयर विल बी साइकिल, कार्बन साइकिल को मेंटेन करता है. Then forest resource. Forest resource, what I think it is being provided the forest. तो forest में बोलने से wood देता है. तो wood for construction purpose के लिए wood can be used. Many things, house construction, जो भी हो, furniture construction, everything we can use the wood. For making paper we can use this wood. ये सब बना सकता है ना. Along with that, अभी कुछ ये क्या बोल दिए, पेड़ पत्ता ये सब गिर गया है, and it will be fallen in the soil, and after long years ये क्या होगा, it will be converted to peat and coal बन जाएगा. So that is act as an energy resource. तो energy resource बन जाएगा. So there are different things, resource, forest resource that is being provided. तो ये क्या ऐसे हम लोग अदर जाएगा, फॉरेस्ट से कुछ रिसोर्स लेके आएगा, बाहर बेच देगा, एंड दैट विल गिव समथिंग फॉर लाइवलीहुड. इकोनॉमी देगा, वो इकोनॉमी से वी कैन मेक समथिंग लाइवलीहुड. दैट इज अनदर थिंग दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड. फॉरेस्ट प्रोवाइडेड एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम मल्टीपल डिजास्टर्स. एक हो गया ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए इट इज वेरी मच यूजफुल. सेकंड हो गया, जैसे स्लोप है, हम बोल दिया है वाटर को कैसे स्टोर करेगा. ऐसे इफ देयर इज अ ट्री हियर एंड इट हैज डीप रूट, ऐसा डीप रूट है, तो इफ द सोइल इज लूज हियर, तो क्या होगा, इट विल प्रिवेंट दिस सोइल टू फॉल डाउन. सोइल नीचे नहीं गिरेगा. दैट मीन्स इट कैन प्रिवेंट द लैंडस्लाइड्स और इट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड. उसको तो कम कर सकता है. So that is actually natural asset hai, but if there is human, that can be converted to disaster. So this can be prevented. Then how medicinal values. The forest have lot of medicinal plants in it. We are using it.
तो ये भी इट्स एक्चुअली रिजर्वॉयर ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स है ये फॉरेस्ट। तो दैट उसी तरह से भी ये फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल। रेगुलेट द क्लाइमेटिक कंडीशन है, हम बोल दिया है टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेगा, एंड इट विल आल्सो कंट्रोल द प्रेसिपिटेशन। वी नो दैट अभी फॉरेस्ट एरिया तो उसी एरिया पे देयर इज हाई चांस ऑफ रेनफॉल है। So this is how the forest is being useful, and the forest and the animals have been useful for the human beings. So इसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ये फॉरेस्ट ये सब चीज को कैसे कंट्रोल करेगा? फर्स्ट स्टेप टू कंजर्व द फॉरेस्ट। We have studied what is forest, how it is being, how the forest and the wildlife help us to retain a good environment and a good ecosystem, and what are the uses of this wildlife and the forest that we have studied. इसका एक importance है, तो इसे क्या करना है? We have to conserve it. So what are the measures to conserve this forest, this wildlife? To conserve the forest, the first and priormost thing is to create the forest. How it can be done? It can be done through afforestation and reforestation. Afforestation means creating forest in a new land. अभी barren land है, नहीं तो waste land है. If we are planting, तो उधर बाद में forest बन जाएगा. There we have heard of lot of stories regarding the same. Reforestation is like that. अभी एक जगह पे forest था, but for some purpose, especially if you take the shifting cultivation, June cultivation, उसी टाइम में क्या होगा? We will remove the forest. But क्या करना है बाद में? After agriculture, we want to replant. उधर again forest को बना सकते हैं. Reforestation. The foresting in an area which was earlier a forest. That is reforestation. ये कर सकता है. Second one is controlling forest fire. आप लोग सुना होगा 1-2 साल के पहले Amazon जंगल पे forest fire हुआ था. Later we have heard about the forest fire in Australia. Lot of wildlife has been वो मर गया है, bird animals मर गया है, बहुत forest cover इस fire के अंदर हो गया है. Actually they are the carbon sink है, उधर carbon reduce करके they are providing oxygen. If a huge area of forest is being removed, तो उतना amount, that much of oxygen will be removed from the atmosphere. उतना oxygen को remove करेगा, उतना there will be that much of increase in the carbon dioxide. This forest fire is also doing the same. Forest fire is actually removing the forest area, उसी उतना area forest area को remove कर रहे हैं, and जो उसमें fire होता है उसमें से ही pollution हो रहा है. So control this forest fire. Then proper utilization of forest resource. देखने में बहुत ज्यादा forest है, तो हम क्या करेगा? कुछ एरिया को फॉरेस्ट फायर डाल के उधर से फॉरेस्ट को निकाल के मेरा एग्रीकल्चर शुरू करेगा. इज दैट गुड? दिस इज नॉट गुड एट ऑल. फॉरेस्ट रिसोर्स को कंट्रोल करके यूज करना है. देयर शुड बी, जो फॉरेस्ट देता है उसी को यूज करना है, उसमें एनक्रोच करके कभी भी कुछ नहीं करना है. अंदर घुस सकता है जो सूखा पेड़, वो सब उड़ा के आ सकता है, नहीं ये तो मिनिमम वुड को काट के यूज कर सकता है. दैट शुड बी रिन्यू करने का टाइम उसको तो देना भी है. अदरवाइज वी वांट टू प्लांट इट, ये कुछ नहीं करेगा. वी आर एक्सप्लॉइटिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेस. Another thing is to protect the forest from pests and the diseases.
एक्चुअली द फॉरेस्ट में जो पेड़ है, ट्रीज है, जो भी हो, दे आर ऑलमोस्ट रेस्टिव, वेरी रेस्टेंट है, बट स्टिल देयर इज चांस ऑफ पेस्ट का अटैक होने का चांसेस है, नहीं है तो कुछ डिसीजेस होने तो इट विल कॉज रिडक्शन इन द फॉरेस्ट कवर. So we want to prevent that kind of things to be happen. And another thing is to give education, to give awareness regarding the climate change due to deforestation. Deforestation के वजह से how the climate is changing, how the carbon dioxide is increasing, how the increase in the carbon dioxide affect the temperature of the area. ये उसको तो सिखाना है. And also we want to tell them the importance of forest. Then we can conserve the forest. And we have to encourage people to plant the trees and to look after the plants. वो plants को नहीं है तो trees को उसका planting encourage करना है. This is very much useful if we have done that from the schooling days. School से ये शुरू करने से बहुत अच्छा होगा. तो बच्चे लोगों को समझ में आएगा the importance of trees. That is also possible. Then various reforestation programs इनिशिएट करना है. लाइक वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे में वी विल प्लांट ट्रीज. जून 5 को वी आर प्लांटिंग. ऐसा बहुत कुछ डेज बनाना है. इसी डे में आपको प्लान करो बोलते नहीं है तो कुछ इनिशिएट नए इंडस्ट्री और जो भी चीज बना रहे उसके साथ वी कैन अटैच इतना सा प्लान भी इसके साथ बना देगा. अभी बहुत कुछ अभी प्लान से वॉक्सवैगन नहीं है तो अभी क्या है निशान जो भी है अपना प्लान के सामने दे आर एनकरेजिंग प्लांटिंग ट्रीज. ऐसा भी कर सकता है. सो दीज आर द मेजर स्टेप्स टू कंजर्व द फॉरेस्ट. देन टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ. इफ वी से द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वी वांट मेनली उसको तो कुछ नहीं करना है. अभी यहाँ से फूड लाके उधर उसी को नहीं देने की जरूरी नहीं है. दे हैव इनफ फूड, दे हैव इनफ शेल्टर. वेयर इज इट? दैट इज द फॉरेस्ट कवर. सो प्रिजर्विंग और कंजर्विंग फॉरेस्ट itself is a conservation of wildlife. For that the government has initiated different projects like developing protective areas like national parks, wildlife sanctuaries, biodiversity zones. Yes, सब government has initiated. क्योंकि if they have their habitat, they are about होगा, then there will be wildlife. If we destroy that, there will be loss of the wildlife. So first thing is to develop protective areas. Second one is the protecting the endangered species or those species who are in the verge of extinction. उसको तो प्रिजर्व करना है. कैसे प्रिजर्व करेगा? उसको तो लेके कैप्टिविटी में दिख देगा. कैसे? लाइक सू में लेके उसको तो उसका एक दो स्पीशीज को उड़ा के इसी में प्रिजर्व करेगा. एंड हेल्प इन ब्रीडिंग to increase their population. ऐसा करने से अच्छा होगा. तो ऐसा टाइगर रिजर्व है. जो टाइगर रिजर्व होने से टाइगर का ये कम हो रहा है तो टाइगर रिजर्व बन जाएगा. तो उसी एरिया पे there will be promoting increasing number of tigers. अभी यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क वो रिनोस को ऐसा कर रहे हैं तो रिनोस का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रोटेक्ट दोस एरिया को प्रिजर्व करके रखना है. देन as I said, cutting of trees should be strictly prohibited.
तो ये नेशनल पार्क नहीं, ये तो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ये सब बन जाने का मेन चीज वही है। उसके अंदर ह्यूमंस को दे कांट एंटर। इफ द ह्यूमंस इज एंटरिंग देयर, they will start cutting the forest. So prevent that वो करने से, because they are the habitat of animals. Then stopping hunting of wild animals, stop hunting, poaching, ये सब तो stop करना है। Then introducing laws to protect the wildlife and the forest। बहुत ज्यादा laws अभी किसी, अब ऐसा है कुछ वाइल्ड एनिमल्स को मारने से 3 साल to 3 to 10 years उसका तो जेल में भेज देगा। ऐसा बहुत कुछ लॉस है। वी वांट टू गिव अवेयरनेस ऑफ द सेम आल्सो, इतना सा करना है। देन सेट अप बायो रिजर्व, नेशनल फॉरेस्ट, एनिमल रिजर्व, ये सब वी वांट टू क्रिएट, सेटअप करना है। This is how we can conserve the wildlife. Actually, this is about conservation of flora and conservation of forest and the wildlife ऐसा है। But for understanding, there is some more questions you can expect, like what is biosphere reserve, what is wildlife sanctuaries, and what are national forests or national parks. So biosphere reserves, they are vast tracts of land that protect large area of natural habitat, are marked for conservation of biodiversity. Bio reserves ऐसा है, biodiversity होगा उसी जगह पे, and they are एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज होगा। बहुत ज्यादा स्लॉप होगा, नहीं तो उधर का मिट्टी ऐसा होगा दैट इज नॉट स्टेबल होगा, और उधर ऐसा स्पीशीज होगा मोस्टली दे आर अभी उसी एरिया पे एंडेंजर स्पीशीज होगा, ऐसा कुछ ना कुछ चीज उसी एरिया पे होगा। तो बायो वो उधर का जो बायोस्फीयर को रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके देखना है, दैट इज एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी, अभी वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्रेट अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड में निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी हमारा सामने वो कोलकाता में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। ऐसा बहुत कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है। देन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, यहाँ क्या होगा, कुछ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, लाइक रिजर्व फॉरेस्ट विच आर provide protection and suitable living condition to wild animals। तो एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट का एरिया चाहिए, उसी एरिया पे दे आर मोस्टली विजिबल। तो ऐसा वाला एरिया एनिमल्स को जो अडॉप्टेबल एरिया है, उसी एरिया को हम लोग प्रिजर्व करके रखें। टाइगर रिजर्व्स ऐसा एरिया है। अभी पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसका मतलब उधर पेरियार टाइगर रिजर्व है एक्चुअली, उधर टाइगर नहीं तो कहीं पे लायन, ऐसा गिर फॉरेस्ट एरिया, तो उसी एरिया पे लायन का है। तो ऐसा कुछ एनिमल्स इज अडॉप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो ऐसा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, भारतपुर सैंक्चुरी, पेरियार सैंक्चुरी, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ऐसा बहुत कुछ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है। देन नेशनल फॉरेस्ट और द नेशनल पार्क्स, ये सब to place to preserve fauna, flora and landscape and historical objects of that area। अभी इसमें तो सब आएगा, फ्लोरा सबको एक साथ प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा। अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, अभी नहीं तो काशीरंगा नेशनल पार्क, ऐसा यहाँ हमारा आसाम में ये ऐसा बहुत किस्म नेशनल पार्क्स है। तो ये सब हो गया protective or reserved areas for conserving these forest and the wildlife. And that's about the conservation of forest and the wildlife.
tomorrow we can discuss about the ecosystems. That's it. इस एरिया पे कुछ डाउट है? No, sir. Okay. Thank you. Yes. Thank you, sir. Okay. Okay. I will share this PPT. Okay, sir. Sorry again. Sorry for yesterday. Okay. It's okay. It's okay, sir.